Hello everyone. So today we'll start a new constitutional body named as a Finance Commission. So the Finance Commission are commissions periodically constituted by the President of India under Article 280 of Indian Constitution to define the financial relation between the central government of India and the individual state governments. So basically, these are basically created by the of course Indian Constitution के अंदर है. So basically it's a fine. So basically क्या है Article 280 is nothing. It's a specific article to create the financial commissions or the finance commission. So President of India साहब he can make he or she can make ठीक है सब make करते हैं. Then basically it shows the relation between financial relation between the central government of India to the uh, individual state governments, all the individual state governments. Coming next is 280 Finance Commission and recommendations of the Finance Commission. Coming next, the first Finance Commission was established in the 1951 under the Finance Commission, which is 91 Act. Okay. 15 Finance Commission was being constituted since the promulgation of Indian Constitution in 1950. So till now it is like 15th 15 बन चुके हैं अभी तक. Individual commission operate under the terms of reference which are different for every commission, and they define the terms of qualification, appointment, disqualification, term, eligibility and power. Of course, और हर एक कमीशन जो आएगा मतलब फर्स्ट हो, एट्थ हो, थर्ड हो, इनके अलग अलग अपने अपने रूल्स होंगे. यू कैन अलग अलग रेफरेंसेस होंगे. ठीक है, कुछ की क्वालिफिकेशन कोई में कुछ क्वालिफिकेशन मांगेगा. फॉर एग्जांपल इसकी क्वालिफिकेशन दी गई 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए आपको इस फील्ड में. लेकिन इस वाले फाइनेंस कमीशन एट्थ फाइनेंस कमीशन की रिक्वायरमेंट थी कि ठीक है 10 साल का भी चलेगा. ठीक है, बट इन दिस स्पेसिफिक फील्ड. ठीक है, इसमें हो सकता है कि 5 साल का एक्सपीरियंस भी चल पड़े, या फिर 50 का मांगा हो, या फिर 30 का मांगा हो. सो मतलब टर्म भी अलग हो सकते हैं, एलिजिबिलिटी भी अलग हो सकती है. ठीक है, पावर्स भी अलग अलग होती है उस टाइम के हिसाब से. द मोस्ट रिसेंट फाइनेंस कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द 2017, chaired by a retired IAS officer, which is N.K. Singh, a former member of the Planning Commission. ठीक है. The composition in terms. So it is consist of a chairman and four other members. So एक chairman साहब होंगे, then four उसके अंडर members होंगे. So this is a hierarchy. Appoint कौन करेगा सबको? Of course, President of India. On which advice? Whom advice? The advice is given by the Council of Ministers, central government. The Constitution authorizes the Parliament to determine the qualification of members of the Commission. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है पार्लियामेंट को पावर देती है कि व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन. पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि क्वालिफिकेशन क्या होगी. ठीक है, मेंबर्स की. ठीक है, किस मेंबर में किस मैनर में पहले तो कि मेरी एलिजिबिलिटी क्या होगी क्वालिफिकेशन की, एंड किस मैनर में कमीशन को दे विल लाइक सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, मतलब बेसिकली कैसे सिलेक्ट होगा, क्या क्राइटेरिया क्या होगा, कोई टेस्ट होगा, कोई इंटरव्यू होगा, क्या किस बेस पे करेंगे सिलेक्ट. ठीक है, बेसिकली वो accordingly the parliament has specified the qualifications of the chairman and a member of commission. So that accordingly the parliament has specified the जो भी qualifications होंगी. ठीक है, qualifications are like this. हाई कोर्ट का जज अगर आप हैं, और अगर आप क्वालिफाइड हैं हाई कोर्ट जज बनने के लिए, दैट्स द फर्स्ट कि आप कमीशन में आ सकते हैं. स्पेशलाइज नॉलेज इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स तो भी आ सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय. ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू. A person with a wide experience in financial matter and the administration. ठीक है, a person who has a special knowledge of economics. So basically a kind of that. Okay, term. तो अकॉर्डिंग टू अंडर द प्रेसिडेंट कंसेंट हैंडल करते हैं ये. ठीक है, देखो जितना पीरियड के लिए ज़रूरत होगी उतना ही डिफाइन करेंगे प्रेसिडेंट साहब, उतने पीरियड के लिए ये कमीशन रहेगा. ठीक है, दे एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट हो सकती है ऑफकोर्स इनकी. ऐसा होता है ना कि लास्ट वन वी हैव सीन कि अगर आप एक बार बन गए
chairman, you can't be a part of that commission. So, but here you can be, है ना? Disqualification, unsound mind होगा उसका, insolvent होगा, moral triplet होगा. Now you have, if he has such finance or other interests, as are likely to affect prejudicially his functions as a member of commission. So मतलब other interest के लिए आपने join किया हो तो क्या? Functions and power very important. To suggest distribution of net proceeds of taxes to be shared between the center and the state, and the allocation between the states of the respective share of such proceeds. किस प्रपोर्शन में कहीं से मनी आ रही है सेंटर और स्टेट के बीच में वो डिवाइड होगी, और बिटवीन द स्टेट्स के बीच में किस प्रपोर्शन में डिवाइड होगी, फ्रॉम सेंटर टू स्टेट और स्टेट टू स्टेट कैसे वो डिवाइड होगी, ठीक है. To suggest the principle that should govern the grants in it, the states by the center, of course, from the CFI, Consolidated Fund of India. So it is coming, of course, very much important CFI. So किस प्रिंसिपल पे आप एड्स दोगे स्टेट्स को, ठीक है, सेंटर एड देगा स्टेट. Now we have to suggest the measures are needed to augment the consolidated fund of state to supplement the resources of the panchayats and the municipality. Basically for the state, because CFS यूज हो रहा है कंसोलिडेट फंड ऑफ द स्टेट, सो दिस इज बेसिकली वहाँ उनको सजेस्ट करना कि ये वाले मेजर्स आप लो, ये वाले आप नियम बनाओ, ये वाला चीज़ बनाओ, ताकि जो रिसोर्सेज हैं सप्लीमेंट, बेसिकली मनी रिसोर्सेज, हाउ इट विल बी can be maximum reach out to the panchayats in the rural areas and the municipality in the urban areas. So in the state basis, ठीक है, that was done by the State Finance Commission, ठीक है, SFC, okay, to investigate any other matter referred to it by the president of. Basically क्या है, related to finance, अगर president साहब उनके पास कोई topic देते हैं तो उस पर भी आप suggest कर सकते हैं. Till 1960, the commission was also suggested the grants given to the states of, so basically 1960 तक जो grants दी जानी है असम, बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल in lieu of assignment of any shares of the net proceeds in each year of the export duty on jute and jute products. So basically jute and jute products पे जो भी शेयर दिया जाना है वो सिलेक्ट किया जाता था before till 1960. These grants were to be given for a temporary period of 10 years from the commencement of the constitution. Of course 50 में अगर commence हुआ है, ठीक है, 51 में, तो फिर 10 years तक की grant मिली है वो. The commission submits its reports to the president, of course, एंड प्रेसिडेंट साहब दोनों हाउसेज के बीच में रखते हैं विद एक्सप्लेनरी मेमोरेंडम, उस पर एक्शन क्या लिए गए और रिकमेंडेशंस क्या हैं. कमिंग नेक्स्ट, वी हैव एडवाइजरी पावर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन. इट मस्ट बी क्लैरिफाइड हियर दैट the recommendation made by the finance commissioner are only advisory in nature, they are not binding. समझ रहे हो, इनसे यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट. लाइक मैं आपको एडवाइस दूँ तो आप एडवाइस को उसको एडवाइस की तरह लेना, ऐसा नहीं है कि मेरी बात माननी ही है. सेम, ठीक है. तो ठीक है, टू पुट इन अनदर वर्ड्स सो दैट इज जस्ट रोट राइट इट, बट ठीक है. It is now well laid down in the Constitution that the recommendation of the Commission shall be binding upon the Government of India, or that it could be give rise to a legal right. One sec. Of course, to put it in other words, it is nowhere मतलब basically क्या है, गवर्नमेंट को ये बात माननी है नहीं माननी वो डिपेंड करता है कि वो बाइंडिंग है नहीं बाइंडिंग है, नॉन बाइंडिंग डिसीजन, नॉन बाइंडिंग एडवाइस है या बाइंडिंग एडवाइस है. लेकिन आप अगर आप देखो तो कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली मेंशन ही नहीं है कहीं कि यू हैव टू बी बाइंडिंग. ऐसा मेंशन नहीं है कि अगर अगर आपको फाइनेंस कमीशन कुछ बोलता है कि ठीक है इसमें ये चेंजेस होंगे, ये चेंजेस होंगे, ये चेंजेस होंगे, बट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि इनकी एडवाइस को बाइंडिंग एडवाइस की तरह लिया जाए. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन बाइंडिंग एडवाइस. कैसे कुछ शब्द यूज नहीं किए गए, ठीक है. और अगर मतलब बेसिकली देखा देखो, इट वुड गिव राइज टू अ लीगल राइट इन द फेवर ऑफ बेनिफिशियरी स्टेट्स. ठीक है, तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि फाइनेंस कमीशन में कुछ मेंशन किया गया, एडवाइस दी कि रिकमेंडेशन दी, गवर्नमेंट ने नहीं मानी तो लीगल इश्यूज हो सकते हैं गवर्नमेंट को. नथिंग. Administrative powers. Article 280 of the Indian Constitution defines the scope of commission.
President will constitute a finance commission which within 2 years from the commencement of constitution, and thereafter at the end of every fifth year or earlier. ठीक है 5 साल और पहले. The commission is constituted to make recommendation to the president about the distribution of net receipts of taxes between the unions. So this has been done as administrative का हमने देख लिया. अब बेसिकली सेंटर टू स्टेट और स्टेट के बीच में जो भी डिवीजन होगी, defining financial relation between union and state to develop the unplanned revenue. It is also under the ambit of the finance commission to define the financial relation between the union and the state. They will also deal with the devolution of the unplanned revenue. जो प्लान नहीं था वो रेवेन्यू उसको यूज कहाँ करो, ठीक है. Advise union and state government to restore budgetary balance. In recent years, the commission also have been asked to review the state of finance of the union and the states and suggested it ways to restore budgetary balance and maintain macroeconomic stability, independence. Article 280 of the Constitution of India provides for a finance commission as a quasi-judicial body. So it is also very important as a quasi-judicial body. Okay, it is constituted by the President of India every fifth year. अगर पहले भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हो सकती है, ऐसे कोई जरूरी नहीं है. ओके 1951 एक्ट जब ये बनाई गई थी, तो बेसिकली इट इज बेसिकली एक्ट वाज पास बिकॉज एक्ट से जो आ गया वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया बॉडी, बट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बिकॉज ये बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में मेंशन है ये. बट ये जो एक्ट है दिस वाज पास टू गिव अ स्ट्रक्चरल फॉर्मेट. देखो एक हिरार्की बनाना होता है, ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मेट दे दिया इसको, ठीक है. मतलब स्टैंडर्डाइज नहीं थी ये, थी स्टैंडर्डाइज कर दिया आपने उसको, हिरार्की बना दिया है, ठीक है. पहले था कि एक कमीशन है, एक कमीशन बनाया जाएगा जितने मर्जी मेंबर हों, मतलब एक बता दिया कि ये बना सकते हो आप. इसको स्ट्रक्चराइज करने के लिए एक्ट लाया गया कि ठीक है एक होना चाहिए, फिर नीचे 4 इसके मेंबर्स आएंगे, एक चेयरमैन होगा, देन मतलब टू मैच द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बेसिकली, ठीक है. इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, डिसक्वालिफिकेशन क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, ठीक है. कमिंग टू द challenges faced by the finance commission. Financial challenges. So we have a federal nation, so India suffers from both vertical and horizontal fiscal imbalances. So vertical imbalances क्या आते हैं, which is between the central and state governments, and horizontal की बात करें तो between the states, है ना, states governments. Between the central and the state government result from state incurring expenditure disproportionate to their source of revenue in the process of fulfilling their responsibility. So it's very easy to understand. So it is basically in the between the states because of the of course different historical background, resource endowments, and car and can widen over time of course because those states में बहुत ज़्यादा difference है. Now, moving next, since the 1950s, when the first commission presented its recommendations on the transfer of resources between the center and the states, the scale of the distribution of the tax proceeded has changed dramatically. So, from 10% of the total tax receipts of the center in 1950, it rose around 42% after the recommendation of 14th Final Commission. सो ये 10% से 14% राइज हुआ है वो, ठीक है. रिकमेंडेशन फाइनेंशियल कमीशन की थी. नाउ वी हैव द एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस. द 15th फाइनेंस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 27 नवंबर 2017, जो लास्ट कमीशन हुआ था अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द एबोलिशन ऑफ प्लानिंग कमीशन, ठीक है. सो इट इज अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द एबोलिशन व्हिच हैज हैपेंड टू द प्लानिंग कमीशन, ठीक है. Now, and the reduction of goods and services tax, which has fundamentally redefined federal fiscal relations. Again, reorganization of the states of J&K and to the union territories, one of Ladakh, and together basically that was one of the whole finance commission faced new challenges in the process of the evolution of our federal polity. Again, एनकेसिंग चेयरमैन 15th फाइनेंस कमीशन. तो अराउंड जो 15 था लास्ट हमारा उसकी कंट्रोवर्सी देख लेते हैं. यूजिंग द डेटा, दिस इज यूजिंग इट दिस फाइनेंस कमीशन यूजिंग द दिस डेटा मींस दिस इज वेरी ओल्ड डेटा बिकॉज 20 हमारे पास अवेलेबल यही सेंसस है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दैट. तो देखो द 15th फाइनेंस कमीशन हैज बीन मैंडेट टू यूज डेटा फ्रॉम 2011 इंस्टेड ऑफ 1971 सेंसस, ठीक है.
साउदर्न स्टेट्स ने आर्ग्यू किया था मैं पेनलाइज देम फ्रॉम देयर सक्सेसफुल एफर्ट्स बाय कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ बाय डिक्रीजिंग देयर शेयर इन द ओवरऑल रिसोर्स पूल. Despite its political silence, the government is flawed into two reasons. तो बेसिकली उन्होंने बोला ना कि कंट्रोल उन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है बेसिकली. ठीक है. तो दे आर यूजिंग द लेटेस्ट वन जो भी हमारे पास अवेलेबल है 11 का. ठीक है. Once it undermines the core distributive principle of the revenue transfers. Second, the weightage given to the population in the overall distribution is not very high. तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना आपको सेंटर से पैसा मिलता है. ठीक है. That's why there are rows. Geopolitical risks have necessitated higher expenditure on defense and internal security. Natural calamities and disasters have called for higher expenditure on relief and rehabilitation. So of course, नेचुरल डिजास्टर की वजह से भी हाई एक्सपेंडिचर एंड डिजास्टर की वजह से. रिकमेंडेशन की तरफ जाएंगे. वर्टिकल devolution of taxes and the of union to states. It is recommended maintain maintaining the vertical devolution at 45. Sorry, this is not my domain of course. Vertical devolution. So basically, it is at the same level of 42% of the divisible pool as recommended by the 14th Finance Commission. जो पिछला recommendation था 42% का वही mention किया इन्होंने भी. ओके 1% आपको एडजस्टमेंट करवाया गया ड्यू टू द चेंज स्टेटस ऑफ द अर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर की वजह से 1% को आपको इंक्रीज किया गया यहाँ पे. हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन गिवन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स. परफॉर्मेंस बेस्ड अगर आप देखोगे कि सोशल सेक्टर में जितनी हुई है उसके बेस से आप इंसेंटिव या ग्रांट्स दो. फोकस ऑन हेल्थ कितना हो रहा है, एजुकेशन कितना हो रहा है, रूरल इकोनॉमी पे कितना फोकस हो रहा है वहाँ पे. ठीक है. एग्रीकल्चर पे कितना फोकस हो रहा है. ठीक है. दैट्स वाई उतनी ही आप एड या इंसेंटिव दो. गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो रहे हैं जो जुडिशरी रिकमेंड कर रही है वो हो रहे हैं वहाँ पे इम्प्लीमेंट. डेवलप्ड परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव सिस्टम फॉर द पावर सेक्टर. ठीक है. Fiscal space of center, grants of local government, recommended grants for municipal services and local government bodies. This include performance based grant. So this is very new कि आप performance based grant दो. ठीक है. For incubation of new cities and health grants to local governments. Million plus cities. So 100% of the grants are performance linked through the million plus cities challenge fund. MCF. So it is an amount is LCF amount is linked to the performance of these. So basically according to the performance उनको incentive या grant मिल रही है. That is criticism क्या हुआ था कि it is a performance based incentive to disincentivize independent decision making. Any condition on the state ability to borrow will have adverse effect on the spend. Any condition अगर कोई होती है तो स्टेट की एबिलिटी जो बोरो करने की है एडवर्स इफेक्ट ऑन द स्पेंडिंग बाय द स्टेट. देख अगर आप पैसे ले रहे हो बोरो कर यू शुड प्लेस इन दिस की इस मैनर यू शुड पुट मनी इन दिस मैनर कि आपको ये रिवर्स है और आप वो भर भी सको बोरो किया हुआ अमाउंट. ठीक है. so that is not here criticized. It does not hold the union government accountable to its own fiscal prudence and dilutes the joint responsibility that the union state have. Now coming to the process of FC and the fiscal federalism. This is now we can go to the directly to the reforms, not our task. Permanent status. So RBI Governor Shaktikant Das has said कि increasingly it is felt that there is a need to give a permanent status because आपकी हर एक टाइम के बाद अरेंज की जाती है बाय द एक्ट. प्रेसिडेंट साहब करते हैं इसको तो परमानेंट अगर कर दोगे तो फिर ठीक रहेगा. इजी. Continuity in tax devolution and the grants of states. We have this logical decentralization of power and funds of inappropriate tier. रेगुलरली कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट फाइनेंस मतलब रेगुलरिटी भी बनाते रहो. ऐसा नहीं है कि अब 5 साल बाद ही बनाना है या 6 साल बाद. मिनिमम 5 साल बाद बनता है पहले बना सकते हो उसको. ठीक है. पावर टू रेज मोर रेवेन्यू टू स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट्स के पास होना चाहिए कि फाइनेंस कमीशन ज़्यादा रिकमेंड करे कि स्टेट के पैसे ज़्यादा जाए.
So, since the Finance Commission is a constitutional body expected to a quasi-judicial, its recommendation should be turned down by the government. Of course, that I have told you that it's a non-binding decision recommendations. Indian constitution lays down the functions as well as the texting power of the central and state. It is against the background that the issues related to the correction of vertical and horizontal imbalances have been addressed by every finance commission, taking into account the prevailing set of circumstances. However, central transfers to states are not confined to the recommendation of finance commission. तो basically जो भी सेंटर ट्रांसफर कर रहा है स्टेट को दैट आर नॉट कन्फाइंड टू द रिकमेंडेशन उससे बाहर भी जा रहे हैं वो ठीक है. Now we'll do it. The next lecture we have to study the CAG, Comptroller and Auditor General of India. Then we'll move to the, of course, Consolidate Fund of India. Thank you for now.